हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी व्हाट फिजिक्स इज। फिजिक्स का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स की, एंड व्हाई डू इवन स्टडी इट। सो आर यू एक्साइटेड? ओके, लेट्स गो अहेड। देखो, फिजिक्स आप हमारे एवरीडे लाइफ में हर जगह है। जब आपका फोन नीचे गिरता है, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस कि फोन नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? ऊपर गिरना, we don't even use this term, right? Do you like playing cricket? I'm sure you do. जब आप क्रिकेट खेलते हो और आपने बॉल को बैट से हिट किया, तो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों जाती है, या बॉल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी ही क्यों फॉलो करती है? मिरर के सामने खड़े हो तो या एवरीबडी लाइक्स टू डू दैट, राइट? एंड इंश्योर दैट वी आर लुकिंग गुड। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, हाउ आर यू एबल टू सी योरसेल्फ? And what about rainbow? They're so pretty. जब एक light, or you can say that light passes through a prism, इतना सारा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आता कहाँ से है? ये जो सब क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं, these are the questions from your everyday life, right? So physics basically, it's not just a subject. It's something which you experience in your day-to-day life. It's the study of nature and the laws according to which nature behaves. मतलब हम क्या स्टडी करता है कि नेचर क्या है, वो कैसे काम करता है, and we study this in physics. It helps us understand how things move, forces कैसे एक्ट करता है, what is energy, energy conservation क्या है, heat, light, sound, electricity, magnetism, atoms, and the universe itself. अभी ये बताओ, जब क्या आपने कभी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया राइट? एवरीबडी डज इट. डिड यू एक्सपीरियंस अबाउट द लाइट एंड शेडोज? या you cannot imagine your life without light and shadows, obviously. Sound, you love music, right? So you know about sound also. Electric circuits, think of your life without electricity. Can you live without that? No, we cannot even imagine. Even you have a short power cut, it feels horrible. What about the motion of vehicles? Yeah, what about the motion of anything? How do you define it? How do you predict it? And all the technology around you. Everything is physics. When you study all these things, the study of all these things is physics. And the technology, you are looking at your screen right now. Maybe you are using phone, you are using laptop, you are using your tablet, anything. The technology on which it is working on, what is that? The reason behind that is the principles of nature, and we study those principles in physics. So it's not something boring, it's not just for some formulas or something. It's very exciting. And when you study about these laws, okay, this is how the things around you are acting like this. Yeah. So what do you think? फिजिक्स के बारे में स्टडी कब से स्टार्ट हुआ? इज इट लाइक ग्रेविटी न्यूटन के बाद एक्ट करना चालू किया, या फिर जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने केपलर के लॉज के बाद मूव करना चालू किया? डेफिनेटली नो, राइट? तो जो फिजिक्स है, इट एग्जिस्टेड even before we knew about these laws, and there are so many laws, there are so many things which we have no idea of, and they exist. So the laws of nature are like there since the beginning of this universe. It's just that we look into the things, we try to find out the laws. Yeah, how do we find out about the laws?
What humans, there is one thing about humans which is like very good, that we are curious people, we are curious beings. We see things around us, we get curious. Oh, why is this happening? Think about the early humans, like how they started. Like they observed about the planets and the sky. Even if, let's say, that point of time there were nothing like telescopes or nothing, uh, no advanced technology, but they were curious. They thought about it. What is happening? What stars are? How they are moving? They made very precise observations. They noticed the patterns. They asked why, and that curiosity leads to the observations, and based on those observations, people came to know of the laws of physics. Isn't it interesting? Like how the subject has developed over last few hundred years. Like we have made a tremendous, you know, success in this. Earlier, let me just give you an example. Okay, before, let's say, in the time of Newton, Sir Isaac Newton said that light is made up of particles, and he said these particles as corpuscles of light. Okay, just think about it. That light is made up of what? We are talking about light here, and light is made up of particles. He observed some phenomena. He was able to explain those phenomena. And what were those phenomena? Like reflection, refraction, which you have already studied in class 10th. But then after some time, people observed other phenomena also consisting of light. Let's say interfraction, diffraction, interference, diffraction. And these phenomena were not able, people were not able to explain these phenomena using the particle nature of light. So they thought about it, and then we get this wave nature of light. Then people started saying, okay, light is not a particle, light is a wave. And later on, they came to know that light is what kind of wave? It is electromagnetic wave. And what happened? After some time, people came to realize, scientists, but obviously they were just performing new experiments, new and newer things. And so then they came to know about few more experiments, few more stuffs. Let's say about photoelectric effect, Compton effect, and they were not able to explain that neither using the EMF waves. Then people again said that light is made up of the particles, and they said these are the quanta. So this is how basically the laws of nature develop, the theories develop. We observe some things, then we came up with some hypotheses, we gave our theories, then we do perform the experiments, we test them out. If they works, it's fine. If they don't, then we make the improvements. We improvise over the previous laws, or we just came up with completely new theory. Does it sound amazing to you? It sounds amazing to me. Tell me, what about you? जब आप फिजिक्स के बारे में तुम्हारे दिमाग में आता है, तो क्या दिमाग में आता है? इज इट जस्ट द फॉर्मूलाज, सम डेफिनेशंस? Physics is not just formulas, it's not just definitions, it's much more than that. अभी देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू ये u प्लस ए टी. इसमें इफ यू बस ये नहीं सोचना हमें, ओके दिस इज जस्ट द फॉर्मूला. if I give you the value of v, u, a and t, you will just substitute the values, you will find out some expression. No, that's not it. Whenever you see something, you have to question, okay, what is velocity, what is acceleration, when can I use it, and most importantly, when can I not use it, actually ho kya raha hai. So all these things you have to look into this. So you firstly you have to focus on your concepts, and equations will follow itself, and there is nothing to be scared of. Once you understand the concepts, it becomes very easy and very smooth. As I told you, this is all around you. It's not just a bookish subject. If you see,
Everywhere you see, even around you, in your everyday life, you will find so many examples where the things are working on the basis of laws of physics. You wake up in the early morning and you use alarms, don't you? How do you define that? Using sound. आप लाइट ऑन करते हो, how do you define that? How do you explain how the working of the light, electricity, right? अगर खुद को सुबह सुबह मिरर्स में देखते हो, कौन एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है? दैट इज डन बाय ऑप्टिक्स. गर्म पानी से नहाना पसंद है? पानी गर्म हो रहा है एंड कैसे गर्म हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, उसको कौन एक्सप्लेन करता है? थर्मोडायनेमिक्स. एक बस से ट्रैवल कर रहे हो, बस का स्पीड कितना है, एक्सेलेरेशन कितना है, कितने टाइम में पहुंचोगे, ये सब चीजें कौन एक्सप्लेन कर रहा है? all these things are done by mechanics. Or phone, wi-fi, now these are like, you can say, so much basic parts of your life that you cannot imagine your life without them, right? इनको कौन एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड यू स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन फिजिक्स. सो फिजिक्स में आप कुछ ऐसा चीज़ स्टडी नहीं कर रहे हो जिससे आप रिलेट नहीं कर सकते हो. दिस इज द स्टडी ऑफ द फिनोमेना विच इज हैपनिंग एवरी टाइम all around you. Okay, and let's talk about the scale also, कि स्केल पे फिजिक्स एक्ट करता है. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करते हैं. वी टॉक अबाउट एटम्स एंड आपको पता है एटम्स का स्केल कितना होता है? इट्स लाइक 10⁻⁻. अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें, इट्स 10⁻⁻10 मीटर. इट्स दिस स्मॉल. एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द galaxies. Now think about the scale of galaxies. In physics, so we talk about the very small particles to the complete universe. And this is not just a separate discipline. It connects with other disciplines also. It connects with chemistry, it connects with bio, medicine, engineering, electronics, robotics. All these things come together and make our life easy. Are you able to follow up so far? मजा आ रहा है? फिजिक्स का डर थोड़ा कम हो रहा है? तो देखो, जब तुमने क्लास 10 तक पढ़ा तो यू केम अक्रॉस फ्यू बेसिक आइडियाज. थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा. अगर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा तो एफ इज इक्वल टू एम ए, वी केम टू नो अबाउट दिस इक्वेशन. बट लेकिन जो जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हो, 10th स्टैंडर्ड से, तो हमारी जो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो. क्लास 12 में आप क्या पढ़ोगे? क्लास 12 में यू विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. लाइट के बारे में तुम पढ़ने वाले हो. ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. एंड पर्सनली मॉडर्न फिजिक्स इज माय फेवरेट. डू लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. अभी जब तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए ताकि इसका डर ना लगे हमें? हमें पहले समझना है. डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग. इफ यू आर मेमोराइजिंग एनीथिंग, अगर तुम मेमोराइज कर रहे हो, जस्ट थिंक कि तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आई है. बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड समथिंग इन फिजिक्स, इट इज विद यू फॉर एवर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वट एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर you are able to understand that completely. Okay? और कैसे पता लगेगा कि वो समझ आया कि नहीं आया? Just try to explain that. Let's say you are teaching someone or you are maybe teaching someone, a 5-year-old person. इस तरीके से if you are able to explain the concepts whatever you are studying, then you can be ensured कि आपको चीज़ें समझ आ चुकी है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? Try to draw it. Write it down. Write down expressions. Draw the diagram so that you can ensure कि whatever you are studying, firstly आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका जो मैथमेटिक्स है, उसका चीज़ें कैसे एक्ट कर रहा है, दैट पिक्चर शुड ऑल्सो बी क्लियर. थर्ड वन, अपने को क्या करना है? न्यूमेरिकल सोल्व करने में. बिकॉज व्हेन यू सोल्व द न्यूमेरिकल्स, आपको समझ आता है कि चीज़ें एक्चुअली अप्लाई कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. किन दो चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आप कैसे एक थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो. Numericals, when you are solving numericals, don't just substitute the values and get the answer. No, not at all.
थिंक, पोस्ट लेना है, सोचना है क्या दिया गया है, उनसे क्या चीज़ें निकाल पा रहे हो. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, it will be amazing, it will be fantastic. Trust me, it's going to be fantastic this way. तो हमें क्या करना है? फर्स्टली मेमोराइज नहीं करना है, सब चीज़ें समझना है, ग्राफ्स है, डायग्राम्स है, उनको ड्रॉ करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स न्यूमेरिकल सोल्व करना है. इफ यू डू दिस, इट विल बी सो मच इजी. और मैथ्स जो फिजिक्स में आता है उससे बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है. इट्स ए टूल फॉर अस. जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ, इफ यू हैव गिवन समथिंग, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैथ्स हमें बस ये नंबर बता रहा है, बट फिजिक्स बताता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है. इसका मतलब है दैट योर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. So maths is just a tool, and you don't have to be afraid of that. Okay? अभी ये देखो, फिजिक्स से बस ऐसा नहीं है कि तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा. इवन इफ यू डोंट प्लान टू टेक फिजिक्स इन फ्यूचर, this subject is going to help you in future. And how? Because it helps you in thinking logically. अभी अगर आपने कुछ देखा, you in physics you don't just believe someone says, you ask for the evidence. You ask, like, can you do it? Can you measure it by yourself? Can you perform the same thing by yourself? And after doing that, in future, how can you predict the other scenarios? You think about it, like it trains the logical thinking in you. So even if you are not planning to take physics after 11th 12th standards, it's perfectly fine. This is something which is going to build skills in you, and those are going to stick with you forever your life. Okay, abhi finally physics ke hain. This is our attempt to understand the rules of nature, from falling objects to light, electricity, atoms, stars and universe. फिजिक्स में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर. एंड जो हमारा स्केल है वो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होके इवन द particles which are even smaller than electrons, वहां से स्टार्ट होके it goes to the universe. Very big scale. You study about the light, you study about electronics, you study about the motion of the particles. So many fascinating things you will study in your 11th and 12th standards. But कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले make sure, just don't go and read and not think. No, this is not the way to do the physics. Firstly, ask this, क्या समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो उसके पीछे मैथमेटिक्स है, कौन क्या मैथ्स उसको कैसे डिस्क्राइब कर रही है. Don't just think of the maths as some equations or something mathematical derivations. No, not the way to do it. You have to make sure that you understand like how you are applying it. You have to understand it. You have to be curious if you want to enjoy the subject. So what is the most important takeaway? Don't memorize anything. Always understanding, ask questions, be curious. Okay, then bye bye, see you.